civil military synergy. So the various terms, and also it has been used sometimes in a sequence is being changed, as General Upendra Dwivedi would like to call it. It's military civil fusion rather than civil military fusion. It depends on who's leading this change. The military leading. If I can bring it up. So now if we take the journey from civil military relations to the MCF, because MCF is a term which I liked a lot, and the day I took over I said, hereafter we'll not talk about the CMF, we'll talk about the MCF. The reason is, when you talk about the MCF, means military has to take the ownership of moving this civil military relationship forward. Earlier we were always blaming it on or telling that the responsibility lies with the civil. But this is the time the military has to take the ownership. And by that time I went to the staff college and I saw that they were also talking about it, because the China talks about it. So I picked up from page 459 of the DSSC book, and I tried to compare the difference between the CMR and the MCA. So as far the primary objective is concerned, what it talks about, CMR is ensuring democratic control of military and prevent Sharma, Gen Deepak Kapoor, Gen Manoj Pandey, uniform colleagues, veterans, academia, members from the media, ladies and gentlemen. I remember it was in 2008-9 when I was in 2DIV, and a 2-field officer, Colonel Nagar, walked up to me that it seems like you want to study more, so here are the notes or the future thinking by a bright colonel from my regiment. And I looked through that. I was slightly confused, but I think that is the time I got intrigued that I must follow this colonel more often. And thereafter in 2013-14, I walked up to this colonel who had become a brigadier fresh from NDC and just shook hand with him. I said, I just want to feel you because you always think differently. And it so happened that in 2016, I suddenly found my high command wing commander happens to be the same man, that is Gen Raj Shukla. बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं इस बात को जानने के लिए कि ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने इस बुक के ऊपर कहा कि ऑलरेडी इसमें जो कंसेप्ट लिखे हुए हैं उन पर काम शुरू हो चुका है और इस बुक को नज़रअंदाज नहीं, इस बुक को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, इस बुक के कंसेप्ट को। तो दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या इसमें जादू का मंत्र है। ये रक्षा मंत्री जी ने अगर ये कहा तो उनका बड़प्पन है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बात कही। तो मैंने अपनी समझ में ये लिखा है कि भाई अगर हमको अपनी जो रक्षा प्रणाली है या जो सामरिक प्रणाली है उसको और मजबूत करना है तो उस ओर हमें क्या कदम उठाने चाहिए, और वो जितने कदम मैंने लिखे हैं वो सब सिविल मिलिट्री फ्यूजन से लैस है। तो रक्षा मंत्री जी जो कह रहे थे, मेरे ख्याल से सीडीएस साहब ने भी कहा हाँ कि जो टेक्नोलॉजी मिशन से शुरुआत की है, ये जो जिसकी हम बात करते हैं गति शक्ति, सो दीज आर ऑल मिशंस टुवर्ड्स सिविल मिलिट्री फ्यूजन, बट ऑल आई एम सेइंग दैट आई हैव गिवन सम सजेशंस टू रैम्प इट अप इन स्पीड एंड स्केल, उसमें और तेज़ी लाई जाए, उसकी जो समय सीमा है उसमें कमी लाई जाए। जी जी सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रक्षा मंत्री जी ने बात की और वो कहीं ना कहीं एसोसिएट हो रही है आपकी बुक के कंसेप्ट के ऊपर। देखिए, ऑप सिंदूर जैसे मैंने अभी कहा, मेरा ये मानना है कि ऑप सिंदूर वॉज एन ओवरवेलमिंग मिलिट्री सक्सेस। जी, पाकिस्तान हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट्स स्काइज, बट द पॉइंट इज दैट वी कैनॉट रेस्ट ऑन आवर विक्ट्री इन ऑप सिंदूर फॉर डिकेड्स टू कम। A smart country, a thinking nation, revisits its doctrines, and there are a host of things to be done. Most of them are laced, as I say, in the sauce of civil military fusion. जैसे मैंने आपको यूक्रेन का उदाहरण दिया जी, वहाँ भाई एलॉन मस्क, एलेक्स कार्प, इन सब की जो टेक्नोलॉजी शक्ति है जी, वो लगाई जा रही है युद्ध के क्षेत्र। हाँ जी, हाँ हमारे यहाँ भी बड़े अच्छे स्टार्टअप्स हैं, कुछ स्टार्टअप्स को स्पेस कॉम से ऑर्डर मिला है ये वगैरह, तो इन सब की जो शक्तियाँ हैं स्टार्टअप्स जी, 23 IITs हैं जी, मतलब कितनी प्रतिभा है हमारे जी जी, तो इस प्रतिभा को हमें एकत्रित करना होगा जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों की सेवा में। In Ukraine, CMF has coalesced like never before. The war fighter, the technologist Elon Musk, the entrepreneur Alex Karp, CEO of a CIA venture-funded startup called Palantir. So startups are strategic investments funded by the CIA, and the innovationist Palmer Luckey, the theater of war and the marketplace have fused seamlessly, enabling Ukraine, a country without a navy or even an air force,
to discover a novel art and science, that of dronery, to keep one of the world's most formidable militaries, Russia, at bay for 3.5 years. Incredible is the only word to describe such coming together of civil and military